Good evening, boys and girls. I hope everybody's in. A very good evening to you all, boys and girls. I'm sure आज खुश तो बहुत होगे तुम. For a reason being coming from the JIPMAT paper and the feedback that we have got from the students, I'm sure everyone would be feeling extremely happy about what they would have done with JIPMAT, right? Very warm welcome to all of you to this YouTube analysis of JIPMAT exam 2022. I would request all of you who are still waiting, make sure that you're a part of it a little faster so that we can start with a little analysis to help you out with kahan par hain, kya karna chahiye tha, and so forth. So boys and girls, if you can hear us, I would request you to please make sure that you drop in a hi for us. Right, welcome Nandini. Right, so you were there in the previous session as well. Welcome everybody. Okay, now let me welcome our hosts, our faculty members. Very warm welcome, Girish sir. I'm sure JIPMAT paper के बारे में अभी आपसे राय लेंगे and we definitely would be asking things about JIPMAT, कैसा रहा, क्या रहा, क्या कट ऑफ हो सकती है. Sure. Very warm welcome, Vineet sir. We were eagerly waiting for you, right? So very warm welcome, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Right. Nice to see you, sir. Nice to see you. Good, sir. So, so Vineet sir, we know that this JIPMAT paper was a real, जैसे स्माइल लेके आने वाला पेपर होता है, जैसे आपकी स्माइल इस समय है, जैसे मेरी है, जैसे बच्चों की है, तो वो उस स्माइल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पेपर, राइट? So that is how things are. And students are saying that the paper was comparatively easy. Easy tha paper, easy in the terms of because they were prepared, easy in terms of because बहुत सारी चीजें उन्होंने किया था, पता था उनको कैसे करना है. They could strategize well, and from there they could pick the paper beautifully well, right? That was the complete structure as the students mentioned it here. Yes, sir. So, and one more thing, sir. When students say that paper was easy या टफ ये हमेशा रिलेटिव टर्म होता है, राइट? जिस बच्चे ने कल अगर IIM इंदौर का पेपर लिखा हो, बाय डिफॉल्ट उस बच्चे को JIPMAT का पेपर आसान लगेगा. So Absolutely. Definitely, as you said that people were prepared. The one who is preparing for IPM-IIM Indore, by default JIPMAT उसके लिए it will be easier walk for him. Absolutely. So we did a morning analysis on a CLAT, which is for the symbiosis law entrance test. It was the same case. जिसने अगर CLAT के लिए तैयारी किया है, AILET की तैयारी किया है, तो SLAT was again a piece of cake, right? Yes, so yes. जैसे आपने कहा कि जैसे इंदौर के लिए किसी ने तैयारी की है, BMS की कोई तैयारी कर रहा था, तो उसकी तैयारी के साथ तो ये JIPMAT की तैयारी ऑटोमेटिक हो ही जाती है. That's how we were going in. चलिए boys and girls, thank you for joining in on the YouTube. So Vineet sir, let me start from you. I'm sure आपको eagerly awaited test students were looking for it. So if you can help us out with paper क्या रहा, कैसा रहा, how beautiful the paper was. So to go on that. Yeah. So whatever knowledge I have about the paper, by asking so many questions to the students and all, and I by interacting with them, all I got to know that paper was easier as compared to last year. Say आसान था paper. In fact, I was actually surprised by hearing this कि कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे सर जो मेंटली सॉल्व हो जा रहे थे, as in कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट है, कितना परसेंट रिडक्शन है, and so on. And surprisingly, I got the information that the question was match the following questions भी मैथ्स के अंदर पूछे गए थे. Which statement is true or false? ये questions भी पूछे गए थे. So in a way it's a very, very unique sort of question. These kind of preposition which was not there in the last year, right? And paper was easy. In fact, I have got the feedback for all the 3 sections, but QA को अगर मैं compare करूँ LR से और English से, तो QA was as compared to LR and English, QA was थोड़ा easy to moderate level पे था. Whereas the students found LR to be very easy, English to be very easy as well. As usual, mathematics को थोड़ा सा लोग थोड़ा stigma होता है हमेशा कि maths is tougher than QA or tougher than verbal ability or logical reasoning. But still, the students said that mathematics was on the easier side. Although some students are saying sir moderate भी था, कुछ questions ठीक ठाक थे. So basically, my analysis that it was from easy to moderate part. And मैं इससे पहले कि मैं मतलब आगे जाकर के मैं कट ऑफ वगैरह पे बात करूं, बच्चों से बात करने के बाद what I have what I suggest कि भाई अगर पेपर आप खुद कह रहे हैं कि पेपर इतना इजी है तो 300 प्लस तो बनता है सबके लिए, राइट? उससे कम नहीं जा सकता.
Now, if I get into the details of the paper, so here is the list. Here is the topic from which the questions were asked. Can you see the list, sir? Absolutely, sir. Yeah. So it was no surprise. Definitely, it was not. There was not an iota of surprise in this, because all the topics were covered. The first structure is that all the questions were from basic maths, right? Not even a single question was there from higher mathematics. That is the first part. As usual, last year, like last year, 33 questions were there. This year also 33 questions were there. All the questions from basic math, और exactly वही topics से questions पूछे गए थे जिन topics से last year पूछा गया था. Not even a single topic was missed, right? So time, speed, distance was there, time and work was there, trigo was there, geometry was there, right? Trigo plus geometry के भी 2-3 questions थे. Arithmetic के LCM HCF के categorical questions थे, right? And that depends. HCF निकालना था, LCM निकालना था, the basic formula LCM into HCF is equal to product of two numbers. SICI के 2 से 3 questions थे, right? We had questions on progression, linear and quadratic equations के भी 2 से 3 questions थे, right? We had percentages, partnerships के question, एक partnership का question था, mixture allegation was covered, averages was covered, right? And then we have some questions जिसमें कि basically A, B, C, D करके दिया हुआ था, and 1, 2, 3, 4 you have to match the concepts, right? True and false statement for basic mathematics was there. So overall, the impression is that all the questions were from basic mathematics as per the students. That is the first thing. And second thing, that question was, if I look at the level of difficulty, the question was from easy to moderate. In fact, मैं कहूँगा easy to moderate के बीच में भी the standard was leaning towards the easier side, right? I wouldn't say it was leaning towards the moderate side, but it was leaning towards the easier side. Although जैसे कि कुछ feedbacks मिले कि कुछ questions के आंसर नहीं आ रहे थे, right? या कुछ लोगों ने claim कर दिया कि कुछ questions गलत भी. So right now we are not in the position to claim that questions were wrong, but हाँ, अगले maximum 5 to 7 days में the answer key would be out, and उस answer key से पता चल जाएगा कि basically questions गलत थे या नहीं थे. और as a standard for any entrance examination, अगर questions गलत हुए तो the questions are dropped from the final marking. उनको drop कर दिया जाता है generally, as a matter of fact, as a rule, right? So जिनको भी लगता है कि questions गलत थे, they can wait for 5-7 days till the answer keys are out, and definitely by then you'll be assured that questions कैसे थे क्या नहीं थे, right? Questions मैं जैसे कह रहा था, it was mentally solvable questions भी थे, and as per me, so far as the QA part is there, right? QA part में अगर किसी बच्चे ने 33 में से अगर 30 attempt नहीं किया, 29 से 30 attempt नहीं किया, तो फिर मतलब मैं थोड़ा सा दुखी हो जाऊंगा. I'll be a bit unhappy, right? And as per the feedback I have got from the students, right? If you combine all the three sections, I believe that expected cutoff would be 295 plus. To be on the safer side, it could be 320 plus, but again, that needs to be confirmed by Girish sir and Praveen sir in the due course of discussion, right? So from my side, out of 33 questions, 29 to 30, right, ये बिल्कुल attempts होने चाहिए थे, और इसमें मैं 80% accuracy नहीं बोलूँगा, I'll be saying 90% plus accuracy, right? So this is something which I can talk about this section. Praveen sir, this was from my side. Absolutely great, sir. Absolutely great, sir. That was a crisp representation of how the paper was. And to add on to what you have already said, Vineet sir, students के लिए कोई भी पेपर easy इसलिए हो जाता है क्योंकि वो prepared होते हैं, right? And this generally happens with quants के साथ भी होता है. कुछ students ऐसे भी हैं जिनको over confidence हो जाता है LR के साथ कई बार. They think that it's an easy, मैं तो कर लूंगा, right? ये गिरीश सर अभी वाउच करेंगे इस चीज को. दो easy होता है, वो करने के बाद होता है. कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की टेरिटरी में आ जाते हैं और वो जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ भी वो एक अच्छा वर्ताव नहीं कर पाते हैं, hence that creates a big time problem, right? And that happens with the verbal as well, that happens with the entire paper as well, right? Thank you, sir. Okay, Girish sir, if you can help us out with how was this section when we talk about data interpretation and logical reasoning, DI के कितना and LR का कितना, क्या variation, and how's the paper, sir? Okay. तो सर अगर पेपर की बात करें, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट स्ट्रेटेजी सेशन में, सेम उसमें बिल्कुल भी पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, राइट? जिस तरीके के हमने एक्सपेक्ट किया था पेपर बिल्कुल वैसा ही था.
पेपर में कोई भी चेंज नहीं था। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, डीआई की बात करें, तो डीआई से आई गेस अप्रॉक्स 8 क्वेश्चंस वर देयर, राइट, 8 क्वेश्चंस। सो डीआई का अच्छा खासा, एज द नेम सजेस्ट दिस सेक्शन इज एलआरडीआई, तो ये एक्सपेक्टेड था कि डीआई के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली वहां होने वाले। एंड डीआई में भी स्पेशली जो पूछा गया पाई चार्ट पूछा गया, राइट। एंड एज विनीत सर सेड कि बहुत से बच्चों का ये कहना है कि डीआई में 1 क्वेश्चन वाज रॉन्ग, राइट। सो अभी से ये डिसाइड करना कि क्वेश्चन वाज रॉन्ग, मेरा आंसर नहीं आ रहा, मैं आंसर मैच नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मींस क्वेश्चन इज रॉन्ग, अभी से इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, राइट। लेट्स वेट फॉर आंसर की, देन in case you have any doubt with the answer key, share those questions with us, we are here to help, right? So उसके बाद डिसाइड करेंगे। and some are saying कि 1 question is logical reasoning also, that is incorrect, right? So फिर से वही बात है, अभी से किसी डिस्कशन में फाइनल कंक्लूजन में नहीं पहुंचते, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्या करेक्ट था क्या इनकरेक्ट था। बट अगर अभी से देखें डीआई में 8 क्वेश्चन जनरली पाई चार्ट, 2 पाई चार्ट वहां पर पूछे गए हैं, एंड ये सारे क्वेश्चन डूएबल थे, राइट। देन उसके बाद वी हैव इन लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग का वेटेज यहाँ पर बहुत ज्यादा था, राइट। एनालिटिकल रीजनिंग में भी बेसिकली कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस थे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो हम हर बार डिस्कस करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चंस थे, सीरीज से क्वेश्चन था। आई होप कि ये वाला, अब मुझे जो बहुत सारे फीडबैक मिले, इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट की है, सीरीज वाले इस क्वेश्चन ने, राइट। सो डोंट वरी, in case you have any doubt with this particular question, so you can share that question with me, I'll provide you the correct solution for the question, right? And इसके बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्शन से, there was 1 question, right? Sequence से there was 1 question, and अगर और family tree से there was 1 question, and one more important topic जो मैं बार बार आपसे क्लासेस में बोलता हूँ, और आई गेस कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी इस टॉपिक के लिए बहुत अच्छी सी, 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी इस ईयर की बात करें और लास्ट ईयर की भी बात करें, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर, राइट। जैसे कि अगर हम आपने देखा होगा लास्ट ईयर में मैं बात कर रहा था, रोहतक में भी यू हैव क्वेश्चन, एलिट में 18 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली, एंड स्लैट में भी अभी क्वेश्चन आया है, राइट, सेट में भी क्वेश्चन आया, तो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी पूछे गए हैं, राइट। सो ओवरऑल अगर हाँ, यस, क्रिटिकल रीजनिंग मैंने आपसे बोला था, डेफिनेटली you'll find some questions from critical reasoning also. So critical reasoning में आपको courses of action पे क्वेश्चन आया है, argument पे based क्वेश्चन आया, weak and strong argument, and एक और you I guess 2 to 3 questions in critical reasoning we have, right? Statement and assumption, 1 question is statement and assumption, 1 courses of action, and 1 question based on that argument, strong and weak argument, right? So these are the topics जो हम during स्ट्रेटेजी सेशन हम डिस्कस कर रहे थे, सेम टॉपिक, सेम एक्सपेक्टेड। बट अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करके अभी इस पेपर को देखूं, क्योंकि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट के डीएमआई मेरी बहुत से बात हुई है, सो दे आर सेइंग कि सर 32, 33 इससे कम तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, राइट। सो अगर मैं इस लेवल को देखूं, लास्ट ईयर से कंपेयर करके देखूं जब JIPMAT के पेपर को, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा पेपर इजी है, राइट, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्योंकि लास्ट ईयर आई गेस सम क्वेश्चंस वर देयर, राइट, लाइक 3, 4, 5 क्वेश्चंस जो ट्रिकी थे, जो थोड़े ऐसा था कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। बट दिस ईयर अगर आप 32, 33 कर पा रहे हो अटेम्प्ट, 31 भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, दैट मींस पेपर का लेवल बहुत ही, और आपकी प्रिपरेशन इस लेवल पे। मैं रोहतक के पेपर में भी मैंने आपसे बोला था, जब मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि सर पेपर बहुत इजी था और क्यूबॉइड भी हमने कर लिया था बहुत कंफर्टेबली, दैट मींस आप ये समझ सकते हो क्यूबॉइड आप कंफर्टेबली कर ले रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे थी। उस दिन भी मैंने आपसे बोला था आप इस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो कि आप क्यूबॉइड आपको ईजी लग रहा है, राइट। सो जनरली वो कैट के एग्जाम में पूछा जाता है क्यूबॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन, उनको भी वो डिफिकल्ट लग रहा है बट आपको इजी लग रहा है, तो आप समझो आप किस लेवल पे पहुंच चुके हो, इसीलिए आपको ये पेपर इतना इजी लगा। एंड 33 में से 31, 32 आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो अकॉर्डिंग टू मी पेपर वाज इजी, राइट, LR पार्ट। एंड LR पार्ट में गुड अटेम्प्ट है, मैं अगर बात करूं 28 क्वेश्चंस with 100% एक्यूरेसी। आपको ये 28 क्वेश्चंस तो मुझे लगता है कि सब ने करेक्ट किए होंगे, आई होप सभी एग्री करेंगे इस बात से। मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, लेट्स से आपने अटेम्प्ट किए थे बट हो सकता है ये इनकरेक्ट है, बट अगर आपके 28 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ
आप करेक्ट हैं तो दैट यू आर इन द राइट ट्रैक। एंड सिमिलरली अगर और पार्ट्स भी आपके इसी कंपैरिजन में करेक्ट हो रहे तो आप एक राइट ट्रैक में और आप सेफ स्कोर की तरफ जा रहे डेफिनेटली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। And over to you, sir. Absolutely great, sir. Absolutely great, sir. So what we can identify is students were prepared, right? The students were prepared, और इसी की वजह से we can see that the cutoff might remain the same, right? तो या तो सेम रहेगी या उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकती है। एक्चुअली द थिंग इज कि हम जिस डिफिकल्टी की क्लासेस में प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो सब देख के और ये वाला पेपर देख के लोगों को मजा आ गया। मीन दे आर लाइक कि हम तो इतनी डिफिकल्टी लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे थे, पेपर तो एकदम लड्डू मिल गया हमें। सो क्यों? बिकॉज इन लोगों ने प्रिपरेशन इस लेवल पे कर लिए, तो अब इनको ये सारे पेपर बहुत इजी लग रहे हैं। एब्सोल्युटली ग्रेट सर। एक्चुअली उन्होंने सब लेवल पे किया है, तो वी हैव एक्चुअली टेकन इट इन अ टेक ऑफ मोड। तो उन्होंने वो लेवल भी किया है जो लेवल काफी इजी था, उन्होंने वो डिफिकल्ट लेवल भी किया है, अल्ट्रा लेवल भी किया है, फॉर व्हिच दे वर इन अ पोजीशन। क्योंकि बिकॉज सर अगर एलआर के लिए देखें तो दिस इज मैनेजमेंट एग्जाम, और ये IIM रोहतक एंड जिपमैट इज द पेपर जिसकी एलआर की डिफिकल्टी सबसे ज्यादा हो सकती है, राइट। और वो भी इनको इजी लग रहा है, तो दैट मींस की प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छे लेवल पे ये लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके बाद तो इनके लिए कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें इनको लॉजिकल रीजनिंग डिफिकल्ट लगने वाला है। Absolutely. Great, sir. That makes sense for us. Thank you, sir. So now let me take the students to the verbal section here. Boys and girls, मैं आपको कुछ एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे अब हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आपने इंदौर का पेपर किया है, आपने रोहतक दिया है, तो जिपमैट इज समथिंग जो कि ऑटोमेटिक होना ही होना था, राइट। एंड वी न्यू दैट एवरीथिंग वुड बी ऑन द सेम ट्रैक। और हमने एक और चीज बात साथ में कही थी कि थोड़ा सा ट्विस्टेड हो सकता है, पिछली बार से थोड़ा अलग होगा, जो कि इस बार हुआ है। 10% के करीब अलग होना था, मगर आप लोग प्रिपेयर्ड 80% के थे, तो वो 10% आपको पता ही नहीं चला कब 10% के अंदर कोई इंक्रीमेंट हुआ करे। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू अस एंड वांट टू प्रिपेयर फॉर 2023, आप इस चीज को नोट कीजिए कि जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर होते हैं तब पेपर कैसा भी आए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इट इज प्राइमरली अबाउट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ अ स्टूडेंट कि सारे पेपर उनको इजी पेपर लगने लगते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन उन लोगों से ही रहेगा जो भी स्टूडेंट हमें 2023 के लिए सुन रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को ध्यान में रखें कि प्रिपेयर्डनेस सबसे बड़ी चीज है। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास स्कैनिंग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पहले और कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, राइट। सो ये पूरा चीज ध्यान में रखनी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर 2023। लेट मी गो अहेड फ्रॉम हियर। सो जहां तक बात रही वर्बल की, 34 क्वेश्चंस, विद दोस 34 क्वेश्चंस आप लोगों ने पेपर ऑलरेडी दिया है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता है। उसके अंदर सिर्फ एक आरसी था which had 5 questions in it. Then you do have idioms, you do have phrasal verb, you had vocabulary, you had grammar correction, and you also had sentence improvement, you had phrases question. ये वो सारे questions हैं जो कि आप शायद 10 मिनट के अंदर सारे करके बैठ जाएंगे, करेक्ट। सो 10 to 15 minutes is what that you would have taken there, and it was a comfortable idea for most of the students here. तो जहां तक बात रही वर्बल की प्रिपेयर्डनेस अलग अलग लेवल पे थी। We have talked about to the literary aptitude as well. We have talked about how to handle the reading comprehension. We also talked about the parajumbles, how those parajumbles needs to be done. I don't see there were any parajumbles here, but yes, there were 1 or 2 questions on active passive voice, right? जो कि active passive का मतलब हो गया direct indirect active passive are the ones जो बहुत ही archaic variety के questions होते हैं, right? जो जनरली आज की तारीख में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि प्रोग्रेसिव रेफरेंस रखता होगा वो ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं, करेक्ट। बट स्टिल इफ दे हैव आस्क्ड इन दैट, दैट्स अगेन देयर चॉइस, राइट, दे कैन डू दैट, राइट। So with this, Vineet sir, if we were to go to understanding of क्या score हो सकता है, if you may vouch for this last slide here, and would you agree with it? Would you like to enhance something? Considering कि जब स्टूडेंट एक पेपर दे रहा होता है तो पेपर देते वक्त चाहे क्वेश्चंस इजी क्यों ना हो, वो एक फियर फैक्टर रहता है,
नहीं, वो एक फियर फैक्टर जरूर रहता है, यार इतना आसान हो सकता है क्या, मैं तो IIM का पेपर दे रहा हूँ, मैं जिपमैट का पेपर दे रहा हूँ जिसमें जम्मू भी आएगा, बोध गया भी लेगा, 60% होगा, उसके बाद मेरा प्लेसमेंट्स होगा, ये पे पैकेज होगा, वो देखते हुए वो एक अच्छा सा क्वेश्चन को भी ना वो कई बार स्पॉइल कर देता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, करेक्ट। सो ब्रिंगिंग इनटू द साइकोलॉजी, गिरीश सर and Vineet sir, this question would go to both of you. Would you agree with that this should be a good one, or there can be some increment as well? 290 when I'm saying is a bare minimum. Obviously 295 is what that one should get, but 290 is a bare minimum that we go with. Vineet sir, your take on that? Vineet sir, unmute please. Yeah, exactly sir. I 100% agree. मैं आपके स्वर में स्वर मिलाता हूँ. उसका रीजन ये है कि सर एज अ फैकल्टी जब व्हेन वी एनालाइज द पेपर, राइट, सो वी कीप द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, राइट, वी एनालाइज द पेपर इन अ कूल काम कंपोज्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे कि हमें प्रायर नॉलेज वगैरह होता है एंड थोड़ा सा हम फास्ट प्रोसेस करते हैं. बट एग्जैक्टली हम खुद को अगर बिठाएं ऐसे स्ट्रेस माहौल में, ऐसे वातावरण में जहाँ हम बहुत सारे बच्चों से घिरे पड़े हैं, जहाँ पे प्यास भी लग रही है, गर्मी भी है, राइट, उसके बाद एग्जाम का प्रेशर भी है, टाइम लिमिट भी है, समय पे पेपर कंप्लीट करना है, तो बाय और सर जहाँ पे बैठे हैं उसके आसपास चूहा भी घूम रहा है या छिपकली भी होती है कई बार. यस डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. एंड देन यू नो कुछ डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं. सो वैसे वातावरण में, वैसे माहौल में डेफिनेटली एफिशिएंसी और एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी कम हो जानी चाहिए. So it's easier to say that, okay, we are expecting 105, 108 out of 132. Yes, it's easier said than done, right? So definitely, if you say that, you know, in the QA part or in the DI part or in the VA part, as per me, right, if these are the expected cutoffs you are mentioning, I do 100% agree with you, right? मैं आपके स्वर में लाता हूँ. Reason उसका ये है कि we always, you know, we should think from the student's point of view. We should keep ourselves in their shoes, right? It's very easy for any faculty to say that, you know, 100 plus, 105 plus, 108 plus, but that's not the real case, right? जब reality में कभी भी cut off आप देखेंगे तो cut off हमेशा एक particular range में ही रहती है. It doesn't breach that range. So 92 plus for me in the QA part, it's a comfortable cut off, right? Had this been 100 plus, so it will be a safe cutoff, I would say. But 92 plus is okay, fine. That's fine with me. Girish sir, what's your take on the other part? Yes, sir. 98 plus means 100 is a good score in logical reasoning LRDI part, right? See, अगर previous year की cutoff को भी अगर हम consider कर लेते हैं तो 290 plus is a safe score. Means अगर बोले first cutoff के लिए you can expect कि आप first list में आपको call आ सकती है with this score 290 plus. बहुत कंफर्टेबली. बट अगर सेफ स्कोर की बात करें तो वो अगर दिस इज द स्कोर जिससे आपको कॉल आ सकती है, बट सेफ स्कोर अगर देखें तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है 300 प्लस में अगर आप चले जाओगे तो आप सेफ, एक सेफ जोन जो होता है आपका, आप वहां पहुंच जाओगे. बट यस 290 प्लस के साथ डेफिनेटली आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉल तो आने वाली. Especially sir, I am बोध गया के लिए जहाँ पे कि there is no you know 10th and 12th weightage and there is no interview as well. उस केस में थोड़ा सा आपको हायर एंड पे रहना पड़ेगा. But still 290 plus पे जैसे गिरीश सर ने कहा, you can definitely expect a, you know, call. Absolutely. So as Vineet sir, you rightly mentioned, बोध गया की जहाँ तक बात आती है कि भैया अगर आपके 290 प्लस आते हैं तो आपके पास जिस दिन कॉल आता है आपके पास हफ्ते भर का टाइम है, पैसे भरिए एंड यू आर द पार्ट ऑफ बोध गया. दिस इज सिंपल अबाउट इट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट IIM जम्मू तो उनका अपना एक क्राइटेरिया रहेगा, तो बाकी क्राइटेरिया, बाकी 10th 12th का भी आपका मेजर होगा, तब एक कॉम्पोजिट स्कोर बनेगा, उस कॉम्पोजिट स्कोर के बाद आपका होगा. तो ये अभी जम्मू के लिए ये एक रॉ स्कोर है, बट फॉर बोध गया this is going to be a composite score. This is the score, and with this they are going to take the admission in there, right? So this is how things would be for it. I am sure students would have got a great picture of that. So we are assuming that 290 bare minimum हम मान के चल रहे हैं for a list 1. We are talking about bare minimum for a list 1. अब इसका मतलब ये नहीं है boys and girls, please again, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़े कम किए हों, उनके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हों, वेट करो, there would be a second list, there would be a third list as well. So wait and watch. अगर आपका 290 के आसपास है, मेरा 290 का कहने का मतलब ये था कि अगर 290 से ऊपर की तरफ गए हैं तब तो फर्स्ट लिस्ट है ही है, मगर अगर 290 से नीचे है तो थोड़ा वेट करो, हो सकता है सेकंड और थर्ड लिस्ट में भी आपकी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर बनती है. करेक्ट.
So I'm sure most of you would have got the picture for that. And for all those students who would have already appeared for IIM Indore, and they think that they are getting the score, the one that we have already mentioned there. अगर आपको लगता है आपका score उसके आसपास कहीं बन रहा है, so please start preparing for the interviews. And even if it is not the case, start preparing for the interview. There are many students who would have appeared for the SET, which is SET General today for Symbiosis. उसके बाद भी आपके पास interviews and VAT के लिए calls आएंगी. So please make sure that you are well prepared for the interviews. ये एक बहुत important part होने वाला है for your IIMs, even for Rohtak and for Indore, and also for your Symbiosis, right? इंदौर इसके बाद इस इंटरव्यू और वैट के बाद आपके पास सीधा एक CUT रेफरेंस रहता है, फिर हम CUT की अच्छे से तैयारी करेंगे. सबकी तैयारी हो रही है, लेवल वाइज लेवल तैयारी हो रही है. अब उसको हम सबसे लास्ट गियर पे ले जाएंगे और फुल स्पीड की तरफ जाएंगे, राइट? So thank you faculty members, thank you Vineet sir, thank you Girish sir for being there and helping the students. Thank you. Right, and thank you students for being there, and for all the students who are new to this channel, I would request you to please make sure that you subscribe to this channel, and also make sure to like this video so that you get the information in time. Thank you everybody. Bye bye. Thanks. Thank you.